क्या देख रहा है? देखो देखो, लड़की नहीं देखी कभी? हाँ? देखो, चलो देखो, देखो ना, देखो देखो, सी सी सी, क्या किया? फोटो लिया? फोटो दिखा, फोटो दिखा, फोटो, फोटो क्यों लिया? फोटो है, फोटो क्यों लिया? फोटो है, मार्केट में लड़की चलेगी तो फोटो लेगा? ये फोटो है हमारा। हाँ? ये मेरा फोटो है। लिखो फोटो क्यों लिया? फोटो? हाँ? चलो भैया, चलो चलो चलो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो इसको। चलो चलो चलो, खत्म करो बात। चली 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 प्लीज। चाचा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बता, चलिए ना आगे। इनकी फोटो जरूरी है खींचनी। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम उन लड़कों की फोटो खींच रहे हैं जो एक्चुअली लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती हैं उनको देखते हैं ना, तो हम उनकी फोटो खींच रहे हैं। मतलब गलत बात है ना? गलत बात करते हैं। हाँ, गलत बात करते हैं ना, तो वही हम उनकी फोटो खींच रहे हैं। ये देखिए, अद्भुत अद्भुत किस्म के लोग हैं जो मतलब लैच करना कभी छोड़ेंगे ही नहीं। क्या देख रहे थे आप? आप क्यों ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं? नजारा देखो। नजारा? क्या नजारा दिख रहा है आपको यहाँ पे? खुल के वो क्या नजारा दिख रहा है? चांदनी चौक? तो चांदनी चौक सिर्फ यही चांदनी चौक है? इधर ही चांदनी चौक है? पूरा है ना? तो पूरा देखिए ना। हम इसलिए देख रहे हैं कि आप किस तरीके से एक ही पोजीशन पे खड़े हैं तब से, और हमें ही देखे जा रहे हैं। आगे बढ़िए ना फिर आप। क्यों बात क्यों नहीं हुई है? क्या दिख रहा है कुछ खाने को? नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे जी, he just clicked a picture यार। हेलो हेलो, अंकल इधर आइए। फोटो क्यों खींच रहे हैं? फोटो क्यों खींची आपने? क्यों खींची फोटो? दिखाओ जरा फोटो। खींची ना अभी फोटो। फरा खींची ना इसने? नहीं, आप करें अभी डिलीट खींची या नहीं ये दिखा। नहीं, हाउ कैन यू क्लिक अ पिक्चर? नहीं, हम खड़े हुए हैं वहाँ पे रास्ते में, तुम लोग फोटो खींचोगे क्या? अभी देखा, आप डिलीट करिए। बोला ना अभी के डिलीट करो, फोटो डिलीट करिए फोटो। अभी डिलीट खींचा करो। क्यों? एक मिनट, खींचा क्यों? मैडम सारी गलती हो गई। डिलीट करो, पहले दिखा। पहले दिखाओ। See this forward, see this forward, see this forward. सर गलती हो गई भाई, गलती हो गई। क्यों? नहीं है ना, इनकी तो माँ बहने है ही नहीं। इधर दिखाओ ना, फोटो दिखाओ। अरे फोटो दिखाओ ना, आप डिलीट मार दिया सर। दिखाओ, चेक कराओ। एक चेक करो, ये करेंगे। फोटो खींचे, मैंने खुद देखा। अभी खींचा है और हमने भी देखी है फोटो। सब देखिए, ये तेरा मतलब क्या? एक मिनट, सब देखिए। कहाँ है? कहाँ है? अभी मैंने अपनी आंखों से खींची, झूठ बोल रहे हैं। वो आपकी आ गई फोटो। कैसे आ गई? कैसे आ गई? को देख करके एक पैर ना अभी कबर में, समझा ना? हाँ, तो बोलो किया ना? अगर तेरा फोटो नहीं डिलीट मार दे सर। नहीं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अपोलोजाइज करना चाहिए कि नहीं? गलती होगी तो सॉरी बोलो, फिर झूठ बोल रहे हो। पता था ना गलती है, पता था ना गलती है। बोल रहे हो कि फोटो हमने नहीं खींची जब हमने खुद देखी है। उसमें तेरी औरत नहीं करे? हाँ? Not forget the acceptable. Even a sexual pose should not be allowed, because sexual pose always create a sexual effect in the mind of a innocent person. Innocent boy. स्किन कितना दिख सकता है ये आप डिसाइड कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझसे मत पूछिए, मैं साफ कह रहा हूँ। सेक्सुअल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया, आपसे किन अब किससे पूछूंगा? telling you sexual pose may be with cloth or without cloth. अच्छा, with It's a sexual pose. The अच्छा, moment you suppose put a sexual cloth, the moment you put the sexual effects
it affect in the mind of the innocent boy. And then you are blame and you are earning the money. सेक्सुअल पोज दिखा कर पैसा कमा रहे हैं, सर एक सेकंड, और दूसरी तरफ आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं 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 हम तो कुछ नहीं कर रहे जी। अच्छा, आप पहले इसको बंद कराइए, सेक्सुअल जो एटमॉस्फेयर आप लोगों ने बना के रखा हुआ है। एक सेकंड सर, अच्छा सकती है नहीं कर सकती, खत्म। तो कोई फिर आप ये लोगों को क्यों नहीं कहते कि आप अपनी सुरक्षा आपके हाथ में, आप लोगों की सुरक्षा आपके हाथ में है, और आप लोग अपनी सुरक्षा सोच समझ के घर से बाहर निकले सदियों से और आगे भी होगी। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में, आपके हाथ। आपने रेप किया कभी? क्यों? इन्हें मौका नहीं मिला। इन्हें मौका नहीं मिला, नहीं तो कर देते दोनों। बिल्कुल करते। जिस दिन ये एक्साइटमेंट होते हैं वो सर्कमस्टांसेस जो दूसरों ने रेप की, वही सर्कमस्टांस उसी स्थिति में ये होते तो ये भी वही करते। आप ये बोल रहे कि इट वाज बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। क्यों? यार रघु, आई फेल्ट आई वाज रेप्ड। एक पॉइंट के बाद में मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन, और मैं जैसे ड्रेसअप होती हूँ मैं वैसे ही ड्रेसअप होती हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। बट लोगों की नज़र इतनी नीच है, इतनी नीच है, मतलब आप कहीं खड़े हो जाओ ना तो भीड़ जमा हो जाती है। ये लोग इतने गंदे हैं। और कुछ बेशरम कैटेगरी के लोग कैमरा देख के स्माइल कर रहे थे व्हेन आई वाज क्लिकिंग। हाँ, that is very go ahead. Yeah, I was actually expecting that, but I was also shocked because it never happened, because you know what kind of environment is there outside, so you do take care of everything. So you usually we never prepare ourselves, or we don't prefer to dress up as we want, basically. Now, was that the question for me? Yeah, the question was for you. Was that a deliberate attempt to provoke, in a sense, the male, the men in the marketplace? It wasn't, Rajdeep. It wasn't a deliberate attempt to provoke any men. I was dressed exactly the way I dress normally, as I dress here in Mumbai. It wasn't a deliberate attempt. We were walking in the streets of Delhi, and I was surprised at the reaction. People mobbed. Are you saying the reaction would be different in? Are you saying the reaction would be different in Mumbai? Are you saying, Farah, the reaction would be different in Mumbai? Rajdeep, I've never seen people clicking our pictures behind our backs, or standing in a mob and clicking our pictures. I've never noticed that over here. It was for the first time in Delhi. It was a terrible day out. I've not seen that here. Okay, no. It was a terrible day all over the country. I mean, there is not one day that some incident like this is not in the news. And may I address one small thing though? Rajdeep? Yeah, go ahead. When you say that, yeah, so there are people, I understand that there are people who will look at the way they were dressed and they'll say that, okay, they were deliberately provoking a reaction. The point is, they were not dancing anywhere, they were not enticing people, they were walking, okay? And in India, especially when it comes to females, and now in a lot of other things, provocation is treated as justification. No, this is not a provocation. It may be inappropriate, you may find it inappropriate. Does that give you the right to violate somebody's privacy, personal space, click pictures? What are you doing with those pictures? A lady just said she felt raped. The other girl is saying it's the terrible day out. I mean, that is a violation of human decency and rights. This is a human rights issue. This is a big issue. And please, because it's a social experiment, yes, they were sent out in the way that they would be comfortable dressing elsewhere, but does not equate to provoking. The reaction. Actually see the video, so I'm not very sure exactly what the girls were wearing, but I could hear the audio. It wasn't at all surprising. The really frightening thing is that, this experiment is just about what they were wearing and the reaction to that, but symptomatic of a huge thing. There is a massive iceberg below this. This is just those who will say that there's an Indian there are cultural mores, cultural values which require you to dress in a particular way. Wear a salwar kameez, no, don't wear short skirts. This is what we hear, from time to time. And in fact, the worst way, I've heard people say she was asking for it. Yeah.
But the thing is that that's bullshit, of course. We all know that as educated people, right? But the thing is that this is something we are guilty as parents of telling our children down generations and generations. I've done this. I've told my children that, I've told my daughters, if you're going to Chandni Chowk, please don't wear a sleeveless salwar kameez. I've said this to my daughters. And look at me, I'm sitting on your show and talking. So it is something that we have conditioned our girls on, and is wrong on our part, and we need to very seriously re-educate everybody up and down the line, so something like this doesn't happen. And cultural values are only for women, or what? Women must dress a certain way, that's their culture. Men must be respectful of women, that is not Indian culture. Are we saying Indian culture is that women are supposed to be treated like pieces of butter chicken walking down the road? Girls actually can't do that, react, because that would be unsafe. Because when you revolt something like that, people are there. Is it about probably be the last thing to change? I think that will be the last thing. I think that will be finally the last thing that they'll hold on to, the right to lech and the right to perv. That is going to stay the longest. Anything come tomorrow morning? I don't think so, Rajdeep. There are so many laws, to protect rights of the women, but why are these laws not put into practice, or we are not able to enforce these laws? They've been there all the while. Nothing is happening to protect us. I think the need of the hour is to change the mindset of the men and educate men, basically. I completely agree to what Anuja said, Rajdeep, that are the cultural values only for women? No, they are for men equally. See, the man is an equally beautiful creature created by the nature, right? We see men. I work out in the fittest club in the city. I see men walking out in vest, in shorts, but I don't go out attacking or raping them or clicking their pictures. You're getting my point? No, I'm getting your point. I admire the beauty. We are the problem. I admire the beauty. Raghuram, we are the problem. The problem are the men of this country. It's nothing to do with the women. The women are great. Indian women are great. The problem is the men. True. It would seem so, and it definitely is so. I don't think we should have International Women's Day as a solution for something. We should have Indian men's re-education year, and a lot of our politicians need to support that. They need to stop saying irresponsible things, victimizing shaming the victim, and blame needs to be assigned where it is due, with the men who treat women as property, as sexual objects, as less than human. But